starts with a capital C, which unfortunately appears to signify coercion, chaos, confusion, corruption. Correct. Apologies for the slight delay. As usual, we'll do Hindi, English दोनों. थोड़ा समय लगेगा. सब्र रखें आप. उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे. As usual, there are both language people here. So, friends, the controversies around the PM Cares Fund proves that it has been set up by a highly uncaring government, by a highly uncaring ruling party and Prime Minister. PM Cares starts with a capital C, which unfortunately appears to signify coercion, chaos, confusion, corruption by the powers that be. Before I go into the details, the admitted facts are, and they are now in the public domain through all of you, to all of you, that government-run firms, government-owned firms, government property firms have contributed an overwhelming percentage of all donations or contributions to the PM Cares Fund. For the 2-year period or a 3-year period from 2019 to 22, such companies contributed just under 3,000 crores. Just under. In percentage terms, it is very interesting. The number of companies which contributed may be more than 250 or 300. But the total percentage of contribution by those 250 or 300 companies was less than 40%. 60% of the contribution, or just under 60%, was from these government companies. These top donors, contributors include the well-known names ONGC, NTPC, Power Grid Corporation, Indian Oil Corporation, Power Finance Corporation. And there are other companies where the government has a significant ownership and control, all of which has added to just under 60% of all contributions from them, just under 5,000 crores from them, 5,000 crore rupees. Now, friends, this raises very serious conceptual issues of accountability, number one. Or lack of it rather. Lack of it. Lack of transparency, number two. What you call opaqueness. Clear conflict of interest, number three. And constitutional issues of great moment, violating every possible known constitutional canon. And before I delve into them one by one, I want to ask you a simple question. Suppose he, as the Chief Minister of an opposition-ruled state, had announced CM Cares, or he, as an opposition-ruled state Chief Minister, announced CM Cares. What would have happened, friends? CM Cares would have been met by ED, CBI or IT at the doorstep within 24 to 48 hours. And the CM might have raised only 1,000 crores. Here we are talking of 5,000 crores. But if he had raised only 500 crores, you'd have the CBI, ED and IT. Of course, so long as he's the CM of an opposition-ruled state. That is a condition precedent. What are these issues of lack of accountability, transparency, conflict of interest, constitutional violation? First and foremost, this is a fund, as they say, for democracy of
the people, by the people, for the people. This is a fund administered of the Prime Minister, by the Prime Minister, for the Prime Minister's office. I don't mean him personally, but of, by and for the Prime Minister's office. It collects funds under the name and seal, SEAL, of the Prime Minister. It is advertised and administered as exclusively public money. It utilizes naturally the enormous goodwill of the PMO and the Prime Minister, has to. And the so-called trustees are, apart of course from the Prime Minister, they are the Defence Minister, the Home Minister and the Finance Minister. With all this, amazingly, it has no accountability. There is no CAG audit. Only if you, the nation, wants to know the audit, there is no CAG audit. If you, the nation, file an RTI inquiry, it has been argued by the government of India that this is not a public authority. All these great persons and names are not a public authority, so you can't ask a simple question. The trust, the PM Cares, which is a trust, one of the reasons it is kept out of these accountability parameters is on the ground that it does not receive any budgetary support from the government. Now look at the irony. You disapply things like CAG, RTI, government norms on the ground that there is no budgetary support. And yet, government-owned companies, controlled companies, the Navaratnas and the mini Ratnas are the principal donors. पूरा पैसा 60% से ज्यादा 5,000 करोड़ आता है सिर्फ सरकारी 100% सरकारी कंपनियों से, मिनी रत्ना और नवरत्ना से। लेकिन आप सीएजी में नहीं है, आरटीआई में नहीं है, जवाबदेही में नहीं है, पारदर्शिता पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता। आपको बजटरी सपोर्ट क्या होता है? आपका और मेरा टैक्स पेयर रुपया। तो जो ओएनजीसी देता है, जो पावर ग्रिड देता है, वो किसका पैसा है? चलिए ये मान लिया that you are not subject to all this formally. There are matters pending in court. These are sub judice matters. For the time being, there is no Supreme Court or very high court decision directly holding this way or that way. But my question in the public domain on issues of morality, on issues of fairness, decency, transparency and accountability is, why don't you yourself put it up on your website? I received 10 rupees from her, 10 rupees from him, 20 rupees from him, 30 rupees in 6 months. Every month you put up. And then I spent it 5 rupees on this, 5 rupees on that, 7 rupees on that. Every month you put it. These are not matters where you will quibble. On the contrary, the government of India filed an affidavit in court saying, none of this will apply to us because we are not a government of India. There is no budgetary support. Therefore, the whole thing is shrouded in secrecy. Unfortunately, a division bench, which is what lawyers call two-judge bench of the High Court, dealt with the matter, and one of the learned judges, Justice Ravindra Bhatt, now in the Supreme Court, held that this fund is subject to RTI. Remember the interesting conundrum. The Prime Minister's Relief Fund is virtually the same. You give it, I give to it, you give to it, everybody gives to it. It is subject to CAG, it is subject to RTI, it is subject to everything. You created a parallel stream subject to nothing. So the learned judge, Justice Ravindra Bhatt, in that case held that it is subject to RTI. Unfortunately, his brother judge in the division, Justice Sunil Gaur, differed. That's years ago now. Because of difference, it was referred to a larger bench or a third judge. For years, that has not seen the light of the day. There is no hearing on that. To decide these fundamental questions. I have dealt with accountability and transparency repeatedly by giving you examples. Take conflict of interest.
Can the executive government of the day, again I give you the example of a chief minister of a state, or let us say a state organ, not central organ, state organ, can it raise large sums of money through the executive? Executive can be a minister's fund, it can be a ministry's fund, it can be a chief minister's CM cares fund. Can they raise any rupiah one without legislative sanction? What is the first principle of raising money? That there must be an act of parliament or something must be. That's why you pass the budget. That's why you pass the appropriation bill. Or let me go further, at least below the budget and the appropriation bill, some delegated legislative sanction. Here the executive, and that to the highest executive office, the chief executive officer's office, namely the Prime Minister's office, is receiving 5,000 crores, 60% of everything in the fund. Without any legislative sanction, there is no act of parliament which allows this money to be created, collected, put in this fund. I'm not saying you make it a consolidated fund of India, but where is the sanction? Where is the accountability? Where is the tracking? How the representatives of the people who are trustees spend it, what they receive. Everything of this you must do if you are a state disaster relief fund, if you are Prime Minister's relief fund. But the moment you put it into the PM cares, it becomes a black hole shrouded in secrecy. Shrouded in secrecy. So, sir, before I come to my 3 or 4 demands, let me say that each of these 4 issues are vital and important. Accountability, 0. How you receive, from whom you receive. Audit, 0. Transparency, number 2, 0. You can't file an RTI and get any information. Clear conflict of interest, because the people who are paying to you are own government companies. Suppose I pull your ear and say, look, Mr. Government Company, I am the Prime Minister office. You jolly well put X rupees into my fund. This is conflict, this is coercion. This is unacceptable. 4th, constitutional principle is violated because the executive, the chief executive's office is raising large sums of money without any legislative sanction. Friends, it is not necessary that there be a legal compulsion only. You should do it yourself. So my 4 or 5 questions through you to the Honorable Prime Minister, the ruling party, the Government of India, the PMO is: 1. Question number 1, why not disclose by simply putting every month on the website total receipts, total expenditure, name of donors and name of expenditure or recipients? Simple. Constitutional morality, decency does not require compulsion of law. Second question, why not voluntarily submit to CAG? All is well, सब कुछ चंगा है, तो CAG पे क्यों नहीं देते आप? जो कुछ थोड़ा भी संदेह है या संदिग्धता है, वो भी हट जाए, पारदर्शिता आ जाए, देश आपकी शाबाशी देगा, छुपाते क्या है आप? प्रश्न नंबर 2. प्रश्न नंबर 3, उसी रूप से बिना कानून में अनिवार्य हुए और हमारे न्यायपालिका के बिना निर्णय दिए आप आरटीआई में क्यों नहीं अपने आप सबमिट करते हैं? आप तो कर ही सकते हैं, कानून के आधार पर होता है कि नहीं वो अलग बात है. पारदर्शिता, संतुलन, जवाबदेही, ये शब्द आपको बुरे लगते हैं, घबराहट और बौखलाहट पैदा करते हैं, इसलिए आप नहीं करते. चौथा, कुछ न कुछ विधायिका का सपोर्ट और सैंक्शन क्यों नहीं लेते हैं? और कुछ नहीं तो किसी एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते हैं कि उसके अंतर्गत हम अधिकार क्षेत्र जताते हैं, जिसके अंतर्गत मैं इनसे 10 रुपये मांग सकता हूं, इनसे 5 रुपये मांग सकता हूं, इससे 50 रुपये मांग सकता हूं. कोई विधायिका का सैंक्शन ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है. आप कानून तो छोड़िए, कानून तो ऊपर होता है, संविधान सबसे ऊपर, कानून, उसके बाद नोटिफिकेशन या आदेश भी नहीं है कुछ भी. 5वां प्रश्न, इसी को आप परिवर्तित क्यों नहीं करते हैं स्टैट्यूटरी फाउंडेशन? जितने महा फाउंडेशंस हैं
विस्तृत हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो सब स्टैट्यूटरी हैं। पीएम रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इसको आप एक कानून का पोशाक कम से कम आंशिक रूप से क्यों नहीं पहनाते? नंबर 6, आज इसको कई वर्ष हो गए हैं, इतने वर्षों में आपने एक श्वेत पत्र भी जारी नहीं किया। आप हर मंथ तो नहीं रखते हैं, हर 6 महीने में नहीं रखते हैं, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता के आधार पर आप श्वेत पत्र तो लिख सकते हैं कि अभी तक की समरी क्या है, संक्षिप्त वर्णन क्या है इसका। नंबर 7, आपका ये रुपया कहां खर्च हो रहा है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, वैक्सीन्स में, किस प्रकार से, ये क्यों नहीं बताते आप देश को? 8, किस आधार पे ये निश्चित किया जाता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे रुपया 10 दूंगा, इसमें नहीं दूंगा, इसमें 20 दूंगा, इसमें 40 दूंगा? क्राइटेरिया क्या है? Criteria for deployment of funds, why is it not disclosed? If you are able to divert large sums of money for any object and activity you wish, then is it not a cruel joke on the taxpayer? Take for example CSR funds. CSR funds, the object was the development of the local area through CSR projects, that is corporate social responsibility projects. Each of these examples, private ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, मध्यम ले लीजिए, व्यापक ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, पीएम रिलीफ फंड ले लीजिए, प्रादेशिक रिलीफ फंड ले लीजिए, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड ले लीजिए, सब में कोई इम्यूनिटी जो आज आप दे रहे हैं ब्लैंकेट, वो कहां होती है? कहीं नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि रोज खुलते नए घोटाले, भाजपा का यही है कारोबार। रोज खुलते हैं नए घोटाले, भाजपा का यही है कारोबार। पीएम केयर्स घोटाले के तो बीजेपी ही है सूत्रधार, पीएमओ ही है सूत्रधार। सीएजी के दायरे से बाहर रखकर मचाई जा रही है लूट। सीएजी के दायरे से बाहर रखकर मचाई जा रही है लूट। आरटीआई के अंदर आना नहीं है और इसलिए चाहिए नियमों से छूट। ये आपके नाक के नीचे इतने वर्षों से एक प्रोग्राम चल रहा है, देश के नाक के नीचे। एक गौरवान्वित गणतंत्र, लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही किसी रूप से, आंशिक रूप से भी नहीं दी जा रही है, और अपने आप तो दूर, इतनी याचिकाओं के बाद नहीं दी जा रही है। इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं। मेरे 8-9 प्रश्नों का हम बड़ा स्पष्ट और तुरंत जवाब मांगते हैं। हमें आशा तो नहीं है ज्यादा, लेकिन कभी क्या पता कुछ समझ और संतुलन अगर आया तो इसमें आंशिक रूप से कुछ जवाब मिलने चाहिए। I won't do separate because I have done mixed language. So first on this issue, any questions? Then we'll go elsewhere. Exactly. How do you term that as incorrect if you think that that's it? It's completely incorrect. I'll give you one example. It's a really an irony. One of the reasons given in the affidavit of the government is it receives no budgetary support. Is it not like saying Ashwathama Hato? Technically, it doesn't receive any budgetary support. But what is the money which is coming from ONGC, PGC, all these funds? It is nothing but taxpayers' money being paid. The whole complaint is it is without budgetary support, without appropriation bill, without sanction, without parliamentary act. So you have made a virtue out of the weakness. You have made a virtue out of the vice. The whole complaint is that you cannot have a parallel scheme which is unaccountable. The answer is, it is unaccountable, so it is unaccountable.
This is known as self-referential reasoning. You assume what is required to be proved. And as I said, obviously you have much to hide because you are not putting on the website these 5-7 questions I have asked. You are not allowing anybody to ask that question. ठीक है, you don't allow RTI. Let's forget RTI for a minute. You can put these 7 parameters on top now. Get 10 rupees from whom, what period, what spent on, how utilized, and criteria for deployment. Yeah, argument from the Prime Minister's office is very different. Yes. They say consistently for the longest possible time. This was started by during Nehru's time. It was after the Chinese invasion and whatever. The trust had actually collapsed. For the first time, they reconstituted the trust and made a board and everything else. Brought in what they, in their view, the transparency and accountability. Correct. Now, in their view, let me ask 2 questions. If you have these answers, you must have these answers to these questions also. Did Nehru use it in any remote way in the way we are having it operating today? With the equivalent, There was no COVID at that time. we can't have a conversation like this. You have to hear my answer. Equivalent of 5,000 crores of that time of the 60s. Answer no. They are themselves saying it was not operated, defunct. Number 2, if you have it for a 1 month, one month, if you have it for a Chinese aggression, is it relevant? In wartime, whatever is relevant is not applicable now. Number 3, most important. Has any government, including Nehru, applied it in the manner and scope we are seeing now? Remotely, forget applied, remotely. And if it is not, अरे नेहरू जी को तो आप हर चीज में निंदा करते हैं, उनको आप कॉपी क्यों कर रहे हैं इसमें? एक विशाल स्कीम है जो उन्होंने कभी नहीं की थी, उनका नाम क्यों ला रहे हैं आप? आपके हिसाब से तो देश शुरू हुआ है 2014 में, और आज आप 1962 की बात कर रहे हैं, जो कि कभी ऐसी स्कीम आज तक नहीं थी. ये झूठ है कि दिस वाज ऑलवेज देयर. ये झूठ है कि इसका स्वरूप ऐसा था. ये झूठ है कि इसका स्कोप ऐसा था. ये झूठ है कि इसका इस्तेमाल ऐसा था. तो इसलिए ये मिथ्या प्रचार से काम नहीं चलता है. क्या आपको लगता है? और मैं बताऊं आपको कि जो आपने पूछा आरटीआई का प्रश्न तो निर्णित हो गया है, लेकिन डिफरेंस हुआ 2 के बीच में. तो हम न्यायपालिका से भी एक प्रश्न पूछते हैं कि तुरंत ऐसे मामलों को निर्णित करवाना चाहिए, बेंचेस बननी चाहिए. अगर हम दोनों में बीच में मतभेद है 2 जजेस में, तो तीसरी बेंच बननी चाहिए. आज कई वर्ष हो गए नहीं बनी है. तो क्या सर आपको लगता है कि ये जो फंड आ रहा है इसका दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, या कुछ इस तरह? मैंने आपको चारों बता दी इसके आयाम. इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक नहीं है इसका. दुरुपयोग या उपयोग तो तब मालूम पड़ेगा जब आप बताएंगे कि क्या उपयोग होता है, किस कसौटी पे होता है. आपको मालूम है कि आपको क्यों दिया जाता है और इनको क्यों नहीं दिया जाता है. दूसरा, ये आता है सरकारी कंपनियों द्वारा. ये तो कभी हो ही नहीं सकता सही. 60% 5 कंपनियों में और बाकी 40% 150-200 कंपनियों से. नंबर 3, किसी के डेट्स, नाम, डिटेल्स अवेलेबल नहीं है. क्या बताऊं मैं आपको? आपने एक दीवार खड़ी कर दी है, और अगर आप इसको इतना सिंपल, सरल, व्यापक स्कीम मानते हैं तो आप इस सबको छोड़िए. तो तकनीकी बातें हैं, आप क्यों नहीं खुलासा कर देते हैं? और कुछ नहीं तो पिछले 4-5 सालों का श्वेत पत्र में लिख लीजिए खुलासा. खुलासा तो वैसे वेबसाइट पर होना चाहिए हर महीने. तो ये तो सीधा. और मैंने 4 आपको मापदंड बताए हैं. पारदर्शिता 0, जवाबदेही 0, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 100%, और संवैधानिक आधार के कार्यपालिका जिसके मुख्य या मुखिया हैं प्रधानमंत्री. कार्यपालिका इतने बड़े बड़े अमाउंट्स बिना विधायिका के सैंक्शन के नहीं ले सकता. अब इन 4 से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर सरकार बनी कांग्रेस की तो क्या सीएजी ऑडिट करवाएंगे आप लोग पीएम केयर्स फंड की? अब निश्चित रूप से हम कथनी करने में विश्वास करते हैं. मैंने इतने बड़े बड़े आपको इसमें सिद्धांत दे दिए, पहले भी हमने सिद्धांत दिए हैं. हमने इसका निंदा पहले भी की है पब्लिक प्लेटफॉर्म से. निश्चित रूप से या तो फंड होना नहीं चाहिए, और अगर होना है फंड तो आपको जवाबदेही की हिम्मत होनी चाहिए. निश्चित रूप से. मैंने बोला ना, इससे क्या बोल सकता हूं मैं तो बड़ा स्पष्ट बोला. मैं कैसे बोलूं? और Now, have we finished on this?
receive any budgetary support or any Exactly. government money. So how is that contradicting? Now the- even that has gone. That's the point I'm making. I just made the point. I used the same word, budgetary support. This is the supreme irony. One of the reasons given on the affidavit and noted by the Supreme Court 2020, as you rightly mentioned, is it receives no budgetary support. Now, de facto budgetary support is given by finding 60% of taxpayers' money being funneled through Navaratnas and Mini Ratnas. That is why it is directly relevant. So even on that test, the whole thing fails. Government equity is 100% in many cases, or 90%, or it doesn't matter whether it's 85%. सर मेरा सवाल इससे अलग हटके है अलग अभी आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे। आराम से भैया। Sir, in High Court, this year in January, government mentioned that this fund, this is not Government of India fund, the PM cares. You are asking the same question again. You see, you are making distinctions without a difference, and difference without a distinction. You tell me that are you giving money to the PM Cares Fund because it's not a government fund? Are you giving money because of the insignia, the seal, the stature, the goodwill, the name, the position, the post of the Prime Minister? Or a name like Mr. Abhishek Singhvi? Will you give 5,900 crores, but for a government insignia, the highest executive of the highest office on the executive side in the country? Obviously. So the whole point is that it is a fraud and a farce. That's the whole point. It's a fraud and a farce to create something which is entirely de facto governmental, but camouflage it as no budgetary support, but all Navratnas paying. No governmental connection, but Prime Minister is the head, Defence Minister is the head, Home Minister is the head. No CAG, though everything is governmental. No RTI, though everything is governmental. That's the whole meaning of the fraud. Sir, can you correct me? During your trip and Rajiv Gandhi, Prime Minister's office, was there ever an audit by CAG for these funds? Can you tell me? Can you show me any? These funds were not operating in this manner. Where is the question of audit? We had no fund of even 1,000th that amount, of 1,000th that amount. I repeat, probably not 1,000, 1/10,000th of that amount, which was created, collected in the name of the Prime Minister. Who stopped you? Who stopped you to murder? Nobody is stopping you from murder. Why are you not committing murder? It's up to you. You can decide to commit murder. Okay. हाँ जी, दूसरे पे आइए। सर बिहार सरकार ने What stopped us was our sense of principle, morality, and doing things according to constitutionalism, transparency, and accountability. That's what stopped us. Those are adjectives which are mere words as far as this government is concerned. सर बिहार में एक बाहुबली राजनेता है जो सजा याफ्ता थे एक दलित डीएम की हत्या के मामले में, जिस मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे, उन्हें नियमों में फेरबदल करके जेल से रिहा कर दिया गया है। इसको लेकर के आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब गुजरात में किसी जघन्य घटना में के आरोपियों को रिहा किया जाता है समय से पूर्व, आप लोग सवाल उठाते हैं, और दूसरी जघन्य घटना में जो सजा प्राप्त कोई नेता है उसकी रिहाई होती है तो आप खामोश हैं। तो उस आनंद मोहन की रिहाई पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या रुख है? बिल्कुल, अगर आप चौक और चीज का तुलना करेंगे, अगर दो अलग अलग केसेस जिनका कोई समानता नहीं उसकी तुलना करेंगे तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो पूछने वाले को भी पता होना चाहिए और लिखने वाले को भी पता होना चाहिए, अलग अलग चीजें। अगर आपको जो दोनों अपराध हैं बराबर जघन्य लगते हैं, पहली बात तो आप निर्णय कर लीजिए। आप जानते हैं फैक्ट्स बिल्किस बानो का। नंबर 2, ये एक अखिल स्टेट की पॉलिसी है, ये इंडिविजुअल केस ऑफ रिमिशन नहीं है। बिल्किस बानो का केस मैं खुद कर रहा हूं एक पक्ष से। उस केस के 4 तथ्य अगर इस केस में हो तो बताइए। उसमें रेमिशन की रिकमेंडेशन 2 उच्च अधिकारी द्वारा है कि नहीं होना चाहिए। उसमें फाइल्स छुपाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियली, अभी 2 हफ्ते पहले ये हियरिंग। अगर आप इस तक ये प्रश्न पूछते हो, इसे बताना चाहिए आपको, अपने अखबार को भी और सब लोगों को भी। नंबर 3, उसमें ये
इन लोगों के विरुद्ध ही रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कोई कारण लिखित रूप से नहीं दिए गए क्यों ऐसे जघन्य अपराध में इनको छोड़ सकते हैं। जो आप बिहार की बात कर रहे हैं वो एक पूरे प्रदेश के लिए एक निकाला गया है सर्कुलर, जो कई बार पहले निकाला गया है, कई बार पहले, कि जिसने 14 वर्ष उम्र कैद की मानी जाती थी पुराने जमाने में। जितने भी नाम आपने बोले हैं उनकी को 14 वर्ष किसी ने नहीं बताया गुजरात में। ये भी आपको आपके दिमाग से वंचित है। 14 वर्ष नहीं, उसका आधा भी नहीं बताया किसी ने। तो ये तो अलग अलग चीजों पे बिना मतलब मिथ्या प्रचार करने वाली बात हुई, टोटल मिथ्या प्रचार है। सर 14 वर्ष में रेमिशन की नीति कई प्रदेशों में होती है, कई बार हुई है। No, I am not talking about the accused at all. I know nothing about the accused. I am not bothered about the accused. I am just saying that somebody who is just throwing this as a comparator has to be fully informed. There is no comparison. I have given you 4 differences just now. Those 4 differences. जरूरी नहीं है, बिल्कुल। चाइल्ड रेप, प्रेग्नेंट वुमन का रेप और किलिंग में स्टैंड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। may stand. I don't know. There is no policy. मैं hypothetical question क्यों आंसर करूं? आपको मैं पूछता हूं आपके प्रश्न के लिए क्या क्या हुए थे 14 साल? कितने साल हुए थे बताइए? आप बताइए कितने साल हुए थे? No, I am not talking about Anand Mohan. I am saying it's an all state or all India policy जो होती है. It is Anand Mohan may be one of the beneficiaries. I have no idea. There may be hundreds of other beneficiaries. 14 years are applied to so many murderers. It is not an Anand Mohan specific thing at all. This remission is specific to these 6-7 people in Gujarat by orders which are suppressed, by orders having no reason. But here the state is making, amending the old rules to facilitate his... No, it is not an Anand Mohan policy. It is a policy of remission for people who have done 14 years in certain categories. That has been done by many states. Somebody can challenge it. Somebody can do it. Sir, but I am only on a limited question. The two are not comparable under any circumstance. That's all. I am not supporting either Anand Mohan or the policy. I don't know enough about that. But certainly, it makes me think that it is very funny to compare these two things. No, but Dr. Singhvi, in the case of Anand Mohan remission policy, specifically a rule was changed where somebody who is convicted of murdering an official on duty, that clause was removed. So it was essentially to facilitate his release. It may be a policy, generic policy, but it was... I don't know enough facts to mean that it was changed for him. But it's a policy where I know for a fact that lots and lots of convicts may have benefited. That cannot be a person-specific rule. It cannot be. These were remissions granted in Gujarat, person-specific, a particular category for no reasons, none disclosed to the court. And I entirely agree that if this person is a dangerous criminal, this may be quashed by challenge. I would not support it. If somebody, I'm not suggesting I support it. Has any BJP person sat on this podium and said, I will not support the Bilkis Bano? Sir, I am saying so openly, that in case there is something found wrong, it can be challenged, struck down. Because of his political power. His son is an What political power? Political power has been existing for years, decades. He's been in jail. सिंघवी साहब एक सवाल में So many parties. सिंघवी साहब मेरा सवाल एक राहुल गांधी के जमानत वाले मामले को लेकर है कि क्या मानहानि वाले मामले में कांग्रेस पार्टी इसी हफ्ते जाएगी कोर्ट में और क्या आप पेश होंगे उस मामले में? ये सब चीजें आपके साथ शेयर करने वाली थोड़ी होती है। जल्दी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, माकूल रूप से जाएंगे। सर तनखा जी ने कहा कि उनका बयान एक हमने सुना कि जो अप्रोच लिया गया मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता था। देखिए, इंडिविजुअल केसेस को मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन मेरे को बताया गया है विश्वसनीय सूत्रों द्वारा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने कभी बयान ऐसा दिया नहीं। नंबर 1, आप उनसे पूछ लीजिएगा। और दूसरा नहीं, मैंने जहां तक तनखा जी का सवाल है ये बता दिया और उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं दिन प्रतिदिन आपके चैनल में सुनता रहता हूं बिना मांगी हुई सुझाव कि मैं 8 घंटे में ड्राफ्ट करके फाइल करना चाहिए और 12 घंटे में मैं पेश हो जाता और सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो मुझे याद आता है वो पंचतंत्र की कहानी कि वही लोग जो ये आपको सुझाव देते हैं अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए और वापस भेज दें आपको, तो वही लोग कहते हैं हमने तो कहा था आपको नहीं जाना था सुप्रीम कोर्ट। चित भी मेरी, पट भी मेरी। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो स्पष्टीकरण दे दिया कि नहीं कहा था मैंने।
लेकिन शायद जिन्होंने कहा है, शायद उसी मीटिंग में जिन्होंने कहा है, वही लोग पहले होते ताली बजाने वाले अगर हम तथाकथित उच्चतम न्यायालय से वापस भेज दिए जाते। अब जिसको कानून के लैडर के बारे में जानकारी है उसको ये पता है अच्छी तरह से। आप लोग ये बोले तो समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति बोले जिसको पता है इस लैडर के बारे में कि एक लैडर होता है और कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे वापस भेज दिया जाता है, उस पर समय नष्ट होता है और वही लोग उसकी निंदा करते हैं। तो मैं उस ट्रैप में फॉल नहीं करने वाला हूं। मैं बहुत खुश हूं गलत करने से। महाराष्ट्र में लगातार पोस्टरबाजी हो रही है। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। शरद पवार कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य कल क्या होगा मुझे पता नहीं है। उद्धव गुट की ओर से आप वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, फैसला सुरक्षित है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें घमासान को लेकर? हमारा स्टैंड एक ही है। इसमें देखिए आप अलग अलग चीजें मिक्सअप कर रहे हैं। अभी स्टैंड ये है कि 14 तारीख तक इंतजार करें, 14 तारीख तक ये निर्णय आ जाएगा, इसलिए इतना सब्र किया है तो 10-15 दिन की बात है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे को ये विश्वास है, आश्वासन है, हौसला है, बिलीफ है और सही आधार पे है कि एमवीए मजबूत है, व्यापक है और रहेगी, और इसमें कोई भी जो शगल या जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं उनका कोई आधार नहीं है। सर, राहुल गांधी के मसले पर वापस जाना चाहेंगे। सर, पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है लोअर कोर्ट की सुनवाई पर, उस पर आप क्या कहेंगे? और क्या क्लब करने की कुछ बात आ रही है कि जैसे कि पटना लोअर कोर्ट में भी चल रहा है, पटना में सुशील मोदी वाला की शिकायत पर, उधर सूरत कोर्ट में चल रहा है, तो उसको लेके उसको देखेंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब ये आंतरिक रूप से निर्णय आया है, ये आंतरिक निर्णय है, ये निर्णय नहीं है। अभी आंतरिक आदेश आया है, उसमें बहुत महत्व है, उसमें बहुत मजबूती है। उस बात में एक व्यक्ति अगर एक भाषण देता है या एक वाक्य बोलता है और 13 करोड़, मेरे को बताया था 13 करोड़ इस देश में इतने लोग हैं इसी नाम से, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमको बताया जा रहा है कि 13 करोड़ यानी 10वां हिस्सा इस भारत का इसी सरनेम से चलता है। तो अगर 13 करोड़ लोग पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूर्व उत्तर से पश्चिम गल्फ ऑफ कैम्बे तक अलग अलग केसेस फाइल करेंगे, तो इसमें तो बड़ा स्पष्ट है कि ये कोई औचित्य ही नहीं हो सकता इसका। तो आंतरिक आदेश को मैं सही मानता हूं, लेकिन अभी ये सब जुरी से निर्णय होगा इसका। सर, Singhvi sir, 2 questions I have. One is before the Karnataka elections now, KS Ishwarappa has given another statement in which he said that we need to think about our religion and culture. And when our girls were being attacked by the Muslim boys, any of the Congress leader has come up to save our girls. And we don't need Muslim vote in the Karnataka assembly elections. I will not fall in the trap which is laid by people like the BJP and the sitting chief minister. I can only express my sadness and regret that even a constitutional authority in the middle of elections cannot desist from political motives in making such a bhadda statement. He wants to draw us into that debate. I am not tempted at all. We don't talk in terms of religion. We don't accept the premises which underlie them. This is only a sign of desperation of a losing, sinking chief minister, a losing, sinking ruling party, where defeat stares them clearly in the face. And that desperation is writ large in the statement you quoted. So, CBI has also filed a charge sheet in a liquor scam in which Manish Sisodia is being named as the That's accused. part of the process. Charge sheets have to follow prosecutions. Law will take its own course. Whatever is happening will happen there. Okay. Thank you. Thank you very much.